हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एएमएस नर्सिंग एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर एंड प्रोलॉन्ग लेबर। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। लेबर शुड प्रोग्रेस नॉर्मली फॉर सेफ डिलीवरी। कॉम्प्लिकेशन कैन थ्रेटन द लाइफ ऑफ अ मदर एंड बेबी। तो जो दो मेजर कॉम्प्लिकेशंस है वो है प्रोलॉन्ग्ड लेबर एंड सेकंड इज ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। प्रोलॉन्ग लेबर का क्या डेफिनेशन है? लेबर जो लास्ट करता है मोर देन 18 आवर्स इन प्राइमी और 12 आवर्स इन मल्टी। सो प्राइमी में अगर ये 18 घंटे से ज्यादा है और मल्टी में ये 12 घंटे से ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं प्रोलॉन्ग लेबर एंड इट मे अकर इन एनी स्टेज ऑफ द लेबर। कॉजेस क्या हो सकते हैं प्रोलॉन्ग लेबर के? यूट्राइन कॉजेस, फीटल कॉजेस, पेल्विक, सॉफ्ट टिश्यू कॉजेस। यूट्राइन कॉजेस में वीक और अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। फीटल में लार्ज बेबी, मैल प्रेजेंटेशन है, मैल पोजिशन है। पेल्विक कॉजेस में कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस और सिफेलो पेल्विक डिसप्रपोर्शन सीपीडी। देन सॉफ्ट टिश्यू कॉजेस हो सकते हैं, रिजिड सर्विक्स है या फिर पेरिनियम। सो दीस आर द कॉजेस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लेबर। साइन एंड सिम्टम्स: लेबर लास्टिंग मोर देन 18 आवर्स, मैटरनल एग्जॉशन, डिहाइड्रेशन है, राइजिंग पल्स एंड टेम्परेचर, fetal distress हो सकता है, ड्राई हॉट vagina ड्यू टू डिहाइड्रेशन। So these are the sign and symptoms of prolonged labor. मैनेजमेंट क्या करेंगे प्रोलॉन्ग लेबर का? असेस करना है कॉज ऑफ डिले, क्यों डिले हो रहा है, प्रोवाइड करना है हाइड्रेशन एंड सपोर्टिव केयर, यूज ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन इफ कॉन्ट्रैक्शंस आर वीक। अगर कॉन्ट्रैक्शन जो है वीक है तो हमें ऑक्सीटोसिन देना है। सिजेरियन सेक्शन इफ प्रोग्रेस नॉट अचीव्ड। कंटिन्यूस करना है, मॉनिटर करना है fetal heart rate. So this is the management of prolonged labor. Now we'll see what are the nursing management in prolonged labor. Monitor करना है progress using partograph, maintain hydration, nutrition, provide करना है comfort and emotional support, record vital signs and fetal heart rate, prepare for obstetric intervention if required. So this is the nursing management. Now we'll see what is obstructed labor. When the fetus cannot progress through birth canal despite strong uterine contraction, तो उसको हम बोलते हैं obstructed labor कि strong uterine contraction होने के बाद भी fetus जो है birth progress नहीं कर पाता, birth canal progress नहीं कर पाता, उसको हम बोलते हैं obstructed labor. So true mechanical obstruction exists. Causes क्या होते हैं? fetal causes जिसमें malpresentation है, bro, face, shoulder, hydrocephalus या फिर large body है fetus का. मैटरनल कॉजेस में क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, पेल्विक ट्यूमर्स और डिफॉर्मिटीज, सर्वाइकल डिस्ट्रोशन. सो दीस आर द मैटरनल कॉजेस. नाउ विल सी व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर. सीवियर पेन विद इनइफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शंस, नो प्रोग्रेस ऑफ लेबर डिस्पाइट गुड कॉन्ट्रैक्शन, मैटरनल एग्जॉस्ट हो गई है, डिहाइड्रेट हो गई है, बैंडल्स रिंग विजिबल है, पैल्पेबल है या फिर फीटल डिस्ट्रेस या फिर डेथ. ये है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर. कॉम्प्लिकेशंस क्या रहता है? मैटरनल में यूट्राइन रप्चर है, पीपीएच, सेप्सिस, वेसिको वेजाइनल फिस्टुला, डेथ. फीटल में एस्फिक्सिया, आईसीएच, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, स्टिलबर्थ. सो दीस आर द कॉजेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर. मैनेजमेंट क्या रहेगा? इमीडिएट रिसर्कुलेशन ऑफ मदर. Do not use oxytocin since CS is usually required. After delivery, treat complications like shock, sepsis or fistula. Nursing management. Monitor करना है maternal vital signs और fetal heart rate हो. Provide IV fluids and oxygen as prescribed. Prepare for emergency C-section. Maintain aseptic precautions. Provide करना है emotional reassurance to the mother. प्रिवेंशन क्या रहेंगे लेबर कॉम्प्लिकेशन को? रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स करना है, आइडेंटिफाई हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, यूज पार्टोग्राफ टू मॉनिटर लेबर, एंश्योर स्किल्ड birth attendance, timely referral to higher centers. So these are the prevention of labor complications. So this was about the topic prolonged and obstructed labor, which are major causes of maternal and fetal morbidity. Early detection or timely management can save the lives. Nurses play a key role in monitoring, prevention, and care of the mother and fetus. So this was about my topic. I hope you like the topic. If yes, then please like, share, and subscribe. Thank you.